हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू कानून पुस्तिका। सीआरपीसी मॉक 9th में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। द कंसल्टेशन विद द लॉयर, जो अरेस्टेड पर्सन कंसल्ट करेगा लॉयर से, वो उसकी पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए और हियरिंग के विद इन होना चाहिए। बोथ ए एंड बी। आंसर इज ऑप्शन डी, both A and B. A search warrant is a return authority given to a police officer or any other person for the search of any place, generally for specified things or documents, generally as well as for specified things or documents. Only B of the above. बताइए, जो सर्च वारंट होता है वो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, स्पेसिफाइड थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए होता है। आंसर इज ऑप्शन सी, जनरली एज वेल एज स्पेसिफाइड थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स, दोनों पर्पज़ के लिए। सेक्शन 91 ऑफ CRPC डज नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होता सेक्शन 91? बताइए। कंप्लेनेंट पे, अक्यूज पे, विटनेस पे, ए पर्सन हु इज़ नीदर ए कंप्लेनेंट नोर एन अक्यूज नोर ए विटनेस। आंसर इज ऑप्शन बी, द अक्यूज्ड। नेक्स्ट इज the issuance of summons to a person to produce a document under section 91 of CRPC is डिक्लेरेशन होती है, वो मैंडेटरी होता है, डिस्क्रिशनरी होता है, या इधर ए और सी? आंसर इज डिस्क्रिशनरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंडर सेक्शन 91 ऑफ CRPC, a person who is summoned to produce a document on appearance before the court becomes a witness and can be subjected to cross examination, does not become a witness and cannot be subjected to a cross examination, becomes a witness but cannot be subjected to cross examination, does not become a witness but can be subjected to cross examination. Answer is option B, does not become a witness and cannot be subjected to cross examination. Next is a person who is required merely to produce a document or thing under section 91 of CRPC has to attend personally to produce the document or thing, can cause the document or thing to be produced in the court, either attend personally or accuse the or cause the document or thing produced in the court. Only A and not B or C. Answer is option C, either attend personally attend करना पड़ेगा, या फिर वो document और thing court में produce करनी पड़ेगी। Section 92 of CRPC lays down the procedure for 92 किसका प्रोसीजर दे रखा है 92 में? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कस्टडी ऑफ एनी पर्सन अदर देन अक्यूज, या डॉक्यूमेंट्स इन द कस्टडी ऑफ अक्यूज पर्सन, या ऑल द अबव। आंसर इज ऑप्शन ए, पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के जो कस्टडी में होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट इज where a person summoned to produce a document or thing under section 91 of CRPC fails to attend personally or accused or causes the documents or thing produced in the court against such person, a search warrant can be issued under section 93 of CRPC. A prosecution for offence under section 175 IPC can be launched, either A or B, both A and B. Answer is option D is correct, both A and B. Next is in the prosecution for an offence punishable with under section 175 IPC for non-compliance, disobedience of the summon issued under section 91 of CRPC, the accused cannot take the defence that the document or thing ordered to be produced is not necessarily or desirable for the investigation, inquiry or trial. The accused can take the defence that the document or thing ordered to be produced is not necessarily or desirable for the investigation, inquiry or trial. Answer is option B is correct. Defense ले सकता है accused. Next is who amongst the following is not competent under section 92 of CRPC to order the postal or telegraph authority to deliver the document or thing. कौन सा competent नहीं है ये बताना, competent नहीं है 92 के अंडर। बताइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या नन ऑफ द अबव? आंसर इज ऑप्शन बी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। द वर्ड इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 93 क्लोज 1 सब क्लोज सी CRPC refers to
जो इंस्ट्रक्शन वर्ड दे रखा है 93(1) सब क्लोज सी में, उसका मतलब क्या है, वो किसको रेफर करता है, थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को, लोकेलिटी और प्लेस को, बोथ ए एंड बी, या इधर ए और बी। आंसर इज ऑप्शन बी, लोकेलिटी एंड प्लेस। ए सर्च वारंट कैन बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्लेस। किस प्लेस के रिगार्डिंग सर्च वारंट इशू हो सकता है, वो प्लेस यूज़ की गई हो स्टोलन प्रॉपर्टी को डिपॉजिट और सेल करने के लिए, या फिर उसके काउंटरफिटेड कॉइन और करेंसी नोट्स और स्टैम्प्स को प्रोडक्शन के लिए, सेल के लिए या डिपॉजिट के लिए, या फिर फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट और फॉल्स सील्स के डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन के लिए, या फिर इन सभी में। आंसर इज ऑल द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 95 of CRPC, certain publications can be forfeited and such warrant can be issued for the same. In the context, the propositions are, ये कुछ प्रोपोजिशन दे रखी है, 3 प्रोपोजिशन दे रखे हैं 95 में, जो पब्लिकेशन फॉरफिटेड और सर्च वारंट इशू किए जाते हैं उस रिगार्डिंग। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। ए न्यूज़पेपर कैन नॉट बी फॉरफिटेड और सर्च वारंट कैन नॉट बी इशूड फॉर द सेम एज इट वुड बी वॉयलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच and expression and involves the fourth estate. A book can be forfeited and such warrant can be issued for the same. A document can be forfeited or such warrant can be issued for the same. A and B are correct, A and C are correct, B and C are correct, या all are correct. Answer is option C, B and C are correct. Book and document can be forfeited and such warrant can be issued for the same. Section 87 of CRPC authorizes issuance of warrant in lieu of summon, in addition to summon, both A and B, none of the above. बताइए 87 में जो वारंट इशू किए जाते हैं वो समन के साथ एडिशन में किए जाते हैं या उसके अलग से किए जाते हैं, या बोथ ए एंड बी। आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर अंडर सेक्शन 95 ऑफ CRPC कैन बी सेटिसाइड बाय, किसके द्वारा सेटिसाइड किया जाएगा, जो फॉरफीचर की डिक्लेरेशन दी गई है 95 के अंडर, वो सेटिसाइड किसके द्वारा की जाएगी, मजिस्ट्रेट इशूइंग द सर्च वारंट, CGM और CMM, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। आंसर इज ऑप्शन डी, हाई कोर्ट। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेटिसाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर हैज़ बिन प्रोवाइड, जो फॉरफीचर के डिक्लेरेशन सेटिसाइड करवाने के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना दिया गया है, कौन से सेक्शन में दिया गया है, अंडर सेक्शन 95, 96, 97 या 98, और 1 month, 2 month, 3 month या 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन। आंसर इज ऑप्शन बी, 2 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन of declaration under section 96 of CRPC. Next is during investigation a search can be conducted without warrant by, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा विदाउट वारंट जो सर्च कमिट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एनी पुलिस ऑफिसर, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, बोथ ए एंड बी, इधर ए और बी। आंसर इज ऑप्शन बी, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सर्च विदाउट वारंट कैन बी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 103 ऑफ CRPC। किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए विदाउट वारंट वाली सर्च में, इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट हु इज़ कम्पिटेंट टू इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस, इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट कम्पिटेंट टू इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। आंसर इज ऑप्शन ए, इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट हु इज़ कम्पिटेंट टू इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस। सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्लेस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है सर्च वारंट, include search of a person present in or about that place, does not include search of a person in or about that place, includes search of a person in or about that place only if such person is suspected for concealing about his person any article for which search is being made, none of the above. Answer is option C, includes search of a person in or about that place only if such person is suspected for concealing about his person any article for the search which is being made. Next is joining of 2 or more independent or respectable inhabitants of the locality in which the place is to be searched is mandated
जो मैंडेटरी कर रखा है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स होने चाहिए, वहाँ के रहवासी होने चाहिए, निवासी होने चाहिए सर्च करने के दौरान। तो वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? 100 क्लोज 1 में, क्लोज 2, क्लोज 3 या क्लोज 4? आंसर इज 100 क्लोज 4 ऑफ CRPC. 72. Which is where a magistrate not empowered by law to issue a search warrant for a place suspected to contain stolen property erroneously issues a search warrant. The search proceeding shall be void and liable to be set aside. The search proceeding shall not be void and not liable to be set aside. The search proceeding shall be set aside only if challenged by any person aggrieved by the search, either A or C. Answer is option D, either A or C. Section 93 clause 3 of CRPC provides that no magistrate other than a district magistrate or chief judicial magistrate shall issue warrant of search for a document, parcel or other thing in the custody of Postal and Telegraph Authority if the magistrate not so specified issues such a warrant. अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के जो डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो वारंट इशू किया जाता है वो किस किस के द्वारा किया जाता है, और जो मजिस्ट्रेट उसको इशू करने, उस वारंट को इशू करने के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, अगर उसने कर दिया तो क्या होगा? द सर्च प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड. द सर्च प्रोसीडिंग शैल बी वॉइडेबल इफ चैलेंज्ड एट द इंस्टेंस ऑफ पर्सन एग्रीव्ड, शैल रिमेन वैलिड. नन ऑफ द बो. बताइए वॉइड हो जाएगी या वॉइडेबल होगा या वैलिड होगा या इनमें से कोई नहीं. आंसर इज ऑप्शन ए, द सर्च प्रोसीडिंग्स शैल बी वॉइड. In a non-cognizable case where a magistrate orders the police to investigate, in that it will be at par with the cognizable offence case and the police will have all the powers in respect of investigation. तो कौन कौन सी पावर इंक्लूड होंगी इस रिस्पेक्ट में? Includes the power to arrest without warrant, except the power to arrest without warrant. Both are correct depending on the circumstances. None of the above. Answer is option B, except the power to arrest without warrant. Next is section 39 and 40 of CRPC makes it mandatory to give information regarding commission of certain offences. Such information can be given to, ये information किसको दी जाएगी? A magistrate, a police officer, either to a magistrate or to police officer, the magistrate and the police officer both simultaneously. Answer is option C, either to magistrate or to police officer. Next is 76. When the police registers a case regarding commission of a cognizable offence, the registration of the case is under किसके, कौन से सेक्शन के अंडर होगा वो रजिस्ट्रेशन केस का? 154, 155, 156 क्लोज 3, 190. आंसर इज ऑप्शन ए, 154 ऑफ CRPC FIR वाला सेक्शन. नेक्स्ट इज usually a copy of FIR is filed with the magistrate having jurisdiction to take cognizance by the police officer in compliance to, कौन से सेक्शन के अंडर होगा ये cognizance? 156, 157, 158, 159. Answer is option B, 157 of CRPC. Delay in dispatching the FIR to the magistrate under section 157 of CRPC. FIR डिस्पैच करने में डिले हो गई, मजिस्ट्रेट को जो देते हैं FIR की कॉपी, वो उसमें डिले हो गई तो क्या होगा? शैल ऑलवेज थ्रो आउट द प्रोसिक्यूशन केस इन इट्स एंटिटी, शैल नेवर बी ए सर्कमस्टांस प्रोवाइडिंग ए लेजिटिमेट बेसिस फॉर सस्पेक्टिंग द FIR, may or may not be circumstance providing a legitimate basis for suspecting the FIR depending on the facts and circumstances both on record, either B or C. Answer is option C. Next is where the FIR discloses prima facie commission of a cognizable offence and there is a delay in sending FIR to the magistrate under section 157 of CRPC. The investigation must go on. Investigation चलती रहेगी. Magistrate can order for stopping the investigation on account of delay in sending FIR, या फिर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने के ऑर्डर देगा क्योंकि उसके पास FIR देने में डिले हुई है, इस वजह से. द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर स्टॉपिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिले इन सेंडिंग FIR, या फिर वैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने का आदेश दे सकता है. द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर स्टॉपिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नली, या जर्नली इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने का
ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट? आंसर इज ऑप्शन ए, द इन्वेस्टिगेशन मस्ट गो ऑन। इन्वेस्टिगेशन वैसे ही चलती रहेगी। द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर इन ए केस हैज़ पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस अंडर सेक्शन 158, 159, 160 या 161। आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 160 ऑफ CRPC। The power to direct investigation under section 156 clause 3 of CRPC can be exercised by। इसके द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करने की पावर? मजिस्ट्रेट, सेशन जज, बोथ एंड बी, ईदर ए और बी। आंसर इज ऑप्शन ए, मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट इज सेक्शन 156 क्लोज 2 ऑफ CRPC टेक्स केयर एंड क्योर एनी इरेगुलरिटी। ये हमें बताना है 156 क्लोज 2 में किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, किस चीज़ की टेक्स केयर और क्योर करता है? एनी इरेगुलरिटी इन द कंडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई भी इरेगुलरिटी हुई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या एनी इलीगैलिटी, या फिर कोई इलीगैलिटी हुई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते टाइम। बोथ ए एंड बी, ओनली ए एंड नॉट बी। बताइए, आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज under section 159 of CRPC, a preliminary inquiry can into the commission of an offence can be conducted। जो 159 के अंडर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है ऑफेंस की, वो किसके द्वारा कंडक्ट की जाएगी? बाय द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू टेक कोग्निजेंस। वो मजिस्ट्रेट जिसको कोग्निजेंस लेने की जुरिस्डिक्शन है उस मामले में, या फिर मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट जो जिसके पास जुरिस्डिक्शन है मजिस्ट्रेट के पास, उसके जो सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट है उसके पास, बाय द पुलिस के द्वारा की जाएगी, या ओनली ए एंड बी। बताइए, आंसर इज ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी, दोनों ही कर सकते हैं। द पावर अंडर सेक्शन 159 ऑफ CRPC कैन बी एक्सरसाइज बाय द मजिस्ट्रेट। जो 159 की पावर हैं वो मजिस्ट्रेट के द्वारा कब तक एक्सरसाइज की जाएंगी? व्हेन द पुलिस इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द केस, व्हेन द पुलिस डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस, व्हेन द पुलिस हैज़ फाइल्ड द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC, ऑल द अबव। आंसर इज ऑप्शन बी, व्हेन द पुलिस डिसाइड्स नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस। नेक्स्ट इज the power to require attendance of a person acquainted with the facts and circumstances of the case under section 160 of CRPC requires। क्या रिक्वायर करता है? नोटिस बाय टेलीफोन, नोटिस इन राइटिंग, इधर ए और बी, बोथ ए एंड बी। आंसर इज ऑप्शन बी, नोटिस इन राइटिंग। Section 80, question 86, the investigating officer under section 160 of CRPC cannot require the attendance at a place other than the place of residence of a male who is under age of 18 years या under age of 16 years, a woman, either A, B or C। Answer is option C, a woman। The investigating officer under section 160 of CRPC cannot require the attendance of a male at a place other than the place of his residence who is, जो उसके रेजिडेंस पे ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उससे अटेंडेंस लेगा। तो वो कौन से कितने तक का बच्चा होना चाहिए? वो 15 साल से नीचे, 16 साल से, या 18 साल से, या 21 साल से नीचे का बच्चा होता है वो। आंसर इज ऑप्शन ए, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। नेक्स्ट इज a trial on a police report initiated by the breach of the mandatory provisions relating to investigation is vitiated and liable to be set aside, is not vitiated and cannot be set aside unless the illegality in the investigation can be shown to have brought about a miscarriage of justice, is not vitiated and cannot be set aside at all, either B or C। Answer is option B, विशेड नहीं होगा और सेटिसाइड भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज द प्रीपोजिशंस आर। ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से बताना है कौन सी फॉल्स है, कौन सी फॉल्स ही बतानी है हमें। डिले इन डिस्पैच ऑफ द MR इज नॉट ए सर्कमस्टांस which can throw out the prosecution case in its entity. Delay in dispatch of FIR is a circumstance which can throw out the prosecution case in its entity. The extraordinary delay in sending the FIR is a circumstance which provides a legitimate base for suspecting that the FIR was
was recorded much later than the state date and are affording sufficient time to the prosecution to introduce improvements. Which of the following is correct in respect of aforesaid propositions? बताइए कौन सी करेक्ट है इस स्टेटमेंट इनमें से? आंसर इज ऑप्शन बी. फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स. नेक्स्ट इज सेक्शन 159 ऑफ CRPC एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट. क्या पावर दी गई है 159 में मजिस्ट्रेट को? Restrain police investigation and order magistrate inquiry when the investigation of a cognizable offence by the police is already in process. To order magistrate inquiry into a cognizable offence only in those cases in which the police decides not to investigate the case. To order magistrate inquiry into a cognizable offence where the investigation by the police is already in process. Either A, B or C. Answer is option B. Next है under section 159 of CRPC the magistrate has the power to. 159 के अंदर और पावर पूछ रखी हैं. To power to direct investigation by the police, dispute any magistrate subordinate to him, to hold an preliminary inquiry. Either A or B. Both A, both, only B and not A. Answer is option C. Either A or B. Section 160 of CRPC authorizes a police officer. 160 में पुलिस ऑफिसर को क्या पावर दी गई है? Summon a person as a witness, summon a person for the production of documents, summon a person for the production of any article, all the above. Answer is option A. Summon a person as a witness. A person can be summoned as a witness under section 160 of CRPC by बताइए by police officer, by station house officer, investigating officer, all the above. Answer is option C. An investigating officer. A person who fails to attend on being served with an order under section 160 of CRPC of an investigating officer is liable to be prosecuted under section 173, 174, 186, all the above. Answer is option B. Section 174 of IPC. Laying of trap is a part of, ये हमने कई बार कर चुका है. जाल फैलाना किसका पार्ट है? इन्वेस्टिगेशन का. Section 161 of CRPC covers the cases of information required by the police before the commencement of investigation, after the commencement of investigation, after the conclusion of trial, both A and B. Answer is option A. Before the officer कौन सा नहीं है? Enforcement officer investigating the case under FERA, an officer invested with powers under NDPS Act, officer of Railway Protection Force, all the above. Answer is option B. An officer invested with powers under NDPS Act, ये इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर नहीं है. Next 97. An unjustified and unexplained long delay on the part of investigating officer in recording the statement of a material witness would render the evidence of such witness unreliable, inadmissible, and unreliable. Only B and not A. Answer is option D. Only B and not A. Next is statement made under section 161 CRPC provides investigation of a cross case is always admissible in the main case, may be admissible in the main case, not at all admissible in the main case, admissible in the main case with the leave of the court. Answer is option A. Always admissible in the main case. 99. A refusal to answer questions put to a witness under section 161 of CRPC is an offence under जो क्वेश्चन के आंसर देने से रिफ्यूज़ कर देता है विटनेस 161 के अंडर, वो ऑफेंस है? बताइए है तो कौन से में है? 176 में, 179 में, 187 में, या नीदर A, B और नोर C. आंसर इज ऑप्शन C. सेक्शन 187 IPC. Complaint to a police or statement made to the police that fall under exception 8. Next है complaint to the police or statement made to the police that
fall within exception 8 of section 499 IPC can claim एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्लेम कर सकता है, क्वालिफाइड प्रिविलेज, बोथ एब्सोल्यूट एज वेल एज क्वालिफाइड, नीदर एब्सोल्यूट नोर क्वालिफाइड. आंसर इज ऑप्शन डी, नीदर एब्सोल्यूट एंड नोर क्वालिफाइड प्रिविलेज. तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस. नेक्स्ट मॉक के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.